See, we already know what is training need analysis, but what do you think, according to your point of view, that when we understand about TNA, what it is? The gap areas. Gap areas? Wonderful. It is also to understand and analyze, like under different department, under different role, what are the basic behavioral skills or professional skills that are needed, and not only working on the gap but also keep working to make the department more productive by giving them relevant trainings. Wonderful, wonderful. Thank you so much for that. What else do we understand? I want everybody to put up their points that what we understand. The life was okay. Yeah. We want improvements, upskilling, more output, more productivity, more effectivity. Right. So, what all are the requirements due to which we can enhance all these points which I have said? Okay. Maybe a slightly different perspective. Yes, I please. basically look for what the other person wants to learn, whether he's an individual or whether he's an employee. So, from the learner's perspective, it's very important for the trainer to understand and then plan accordingly. Thank you so much for that. Actually, everybody's points are like valid points when we talk about TNA. Anybody else wants to say anything before we proceed further? Any other point of view? It's If also training is about required knowing at the all. audience in the sense, what is the age group of the audience? What is the background of the audience? Like what they already know, what they don't know, and where they have come from. And age group also matters a lot in doing the training need analysis, because every age group needs to have a different type of training. The delivery would be different. So according to me, this is also included in training need analysis. Thank you, Dr. Deepika. That's actually one of the valid point again. Rajesh, you were saying something. Please go ahead. Yeah, before investing in training, whether training is required at all, basically, to understand that. Yes, that is also a wonderful point. So let us boil down all the points. The first thing is actually whether the training is required or not. The second thing comes later on, but the first thing is as Sujit ji said it, gap, right? But I'm whether it sorry will, to interrupt. I'm yeah, sorry yeah, to interrupt. yes, We are going to analyze. What are we going to analyze? It's need, right? So somebody has asked us to give the training. right. Then we are finding what all are the agendas, what all are the topics on which we'll be delivering it. So the other way I feel is not 100% okay, that training need analysis is why it is needed. Okay. Right? So before that, if we say it is required, I don't think that is correct. Right? Okay. So let me go with an example. Okay. So I have taken that point, and that point is also very valid. Now in our training industry, what is happening, first of all, just a case study I'm putting in forward to understand that why we say that we need, being trainers, we also need to do analysis whether the problem the company is facing, whether training is required or not. It is very, very important. So let me give you one case study. Recently, we had a client meeting. And the client came and told us that we require a training on stress management. So, what do you think? What is my duty to tell them, or what is my duty to take it forward? So, should I take it that, okay, you want a training on stress management? Now I will analyze the age group. Now I will analyze, okay, for stress management, what topics you are looking for, what audience you are giving me. Is it that, or any other thing you should look forward to? Maybe doing a stress test will also help, that what sort of stress is actually there.
Sometimes the stress are defined in different parameters. The stress could be personal, stress could be professional, stress could be for a very long time, stress could be like for a limited amount of time. So maybe that thing also needs to be monitored while giving the stress management training. Okay. Anybody else wants to add anything? Okay. Finding the reason for stress first. The reason for stress? Yes, Shobhaji. Yes. The reason for stress. Any other thing which we need to identify? Is If the whether they have recipients identified the themselves- right thing. Whether they have identified the right thing. Sujit ji is saying. Vijay ji, please go ahead. Yeah. You're taking all the points. Yes. If the recipients themselves feel that there is a need for this, gap. Okay. So what is happening when we do training need analysis is we are going one step back here. So analysis is not only one kind. So there are different types of organizations also, and different types of people with whom we are dealing when we are doing this analysis. So the first thing is, you people are, all of you are right. But why as a trainer, I should accept that my client who has come to me is actually looking for a stress management training? He might be wrong. Do you agree with this, everyone? Yes. Yes. Right. So that Yes. is, yeah. So being a trainer, I have to put my shoes as a doctor here. So somebody is having a pain and they are coming to me. And now they are asking me, see, I have this pain. Maybe they don't know about the pain. Maybe they have taken the topic because of one incident. Maybe they have taken the topic because they want to do some compliance and because they hear that this topic is very much booming in the corporate world. What is the reason? Should I accept that they really require stress management training, or should I start from the scratch understanding why stress management? Right? So that is why I said that first of all, we need to question whether what is the problem, and if this problem can be resolved by training or not. So another question to all of you, do you feel that in an organization, each and every problem can be solved by a training? Do you accept that, or you have a different opinion? Definitely not. No, not Definitely. exactly. Management most of the time thinks like that. Yes. So thank you so much for that reply, because I want any other point of view also. Please raise your hand. Please speak in between. Please stop me. We are here to grow together. So please tell. Kananji, can you repeat the question? There was some internet problem. Yes, Please. Yes, Vishwasji, definitely. I was asking that, do we feel that every problem or every pain point in an organization, every problem can be solved by training? No. Or it is the problem related to training only? That was my question. Maybe the client do not require the trainer every time. Maybe he required a consultant or a coach or a guide or there are many form as a solution provider. So trainer is a one shape of one form of solution provider. Maybe he required a facilitator. Maybe he required a mentor, a coach, a presenter, anchor, anything like this. हम सुनार का काम सुनार ही करेगा, लोहार का काम लोहार करेगा। मेरी चेन टूट गई है और मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी आओ बना दो, ट्रेनर बेचारा क्या करेगा? That's what I said. Exactly. To put it in a different perspective, it boils down to will or skill, right? So whether a trainer can go ahead and fix up will completely or skill completely is left up to the situation and the problem, right? Absolutely, Vijayji. And
आप लोगों ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल बैंग ऑन है, और यही सोच के साथ हमको अपने क्लाइंट के साथ बैठना है। एक और केस स्टडी बताती हूँ। दे टोल्ड दैट प्रोडक्शन डिले हो रहा है, द प्रोडक्शन इज गेटिंग डिलेड। अब ये एक इश्यू है जिसके लिए क्लाइंट को चाहिए कि आप प्रोडक्टिविटी का कोई ट्रेनिंग दो, ठीक है। हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, कैन यू टेल मी रियली उनको 100% प्रोडक्शन की टीम को प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट की ट्रेनिंग चाहिए, या कोई और इश्यू भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, I mean, Numerous. न्यूमरस, यस, एग्जैक्टली। so this is where the diagnostic process came into the picture actually. Yes. So that is why I was saying कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में हमको एक स्टेप उनके पीछे जाना है। हमको ये समझना है कि भाई तुम जो प्रॉब्लम लेके आए हो उसके लिए सबसे पहले तुमको ट्रेनिंग जरूरत है या नहीं है। और वंडरफुल बात ये है कि अभी जो रिसेंटली हमने क्लाइंट मीटिंग किया, एक राजकोट की कंपनी के लिए किया हमने, एंड द प्रॉब्लम वाज एक्चुअली कि मशीन का ना मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं हो रहा था। एंड वो लोग ऐसा समझ रहे थे कि हमारे जो ऑपरेशन के लोग हैं ना उनको ट्रेनिंग चाहिए। एंड देन हमने जो 1-to-1 मीटिंग किया उसमें थोड़ा सा झगड़ा इधर उधर हो गया, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम ट्रेनिंग नहीं था, उसमें सोल्यूशन ट्रेनिंग नहीं था, ट्रेनिंग चाहिए ही नहीं था, उसमें मशीन का मेंटेनेंस चाहिए था। मशीन्स बहुत पुरानी हो चुकी थी, लोगों को सुना नहीं जा रहा था। तो एक्चुअली में हायर मैनेजमेंट को ट्रेनिंग चाहिए था एक्टिव लिसनिंग का एंड दे केम टू अस के प्रोडक्शन को ट्रेनिंग दे दो। सो द थिंग इज माय डियर, आई अंडरस्टैंड, मैं बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट और फ्रैंक रहूंगी क्योंकि हम सब एक ही जैसे हैं। सच बताऊं तो बहुत सारी कंपनीज हमारे पास सीधा टॉपिक लेके आ जाती है और हमारे पास स्कोप नहीं होता कि हम इस प्रकार का हाई लेवल का एनालिसिस करें। मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स किए हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने मुझे बताया है कि मैडम एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, और हमारे मैनेजरियल लेवल को ट्रेनिंग चाहिए था, हमको बिठा दिया। बट द थिंग इज, कई बार हमको अपना बिजनेस चालू रखने के लिए हम बहुत ज्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते कुछ कंपनीज में, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो भी एक पॉइंट है। लेकिन जहां पे भी हमको ऐसा स्कोप मिलता है हमें अपनी कला को दिखाना है। एक्चुअली में उनको जो जरूरत है वो उनको ऑनेस्टली बताना है। तो हम थोड़ा सा बस यही आज चर्चा करने वाले हैं कि कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। और शायद आप लोग वट एवर आई एम शेयरिंग टूडे, आप लोग ऑलरेडी यू माइट बी यूजिंग इट ऑलरेडी। It is just that we are sharing our point of view on this wonderful topic. That's it. So whatever you people shared, that is very much required, and that is only called training need analysis. But we'll go one step back. First of all, we will do a proper manthan, a proper analysis, whether your pain point is correct, whether your audience is correct, and forget about that altogether. Do you require a training for this problem? Right? So this is how we will move forward. Right? So I'm not going to read the presentation. You already have told this. There are gaps. We need to identify, we need to address whom, why, how. Right? How also, why we are doing it and to whom we are doing it. That also Dr. Monica mentioned about the chunk of people we need to identify, the audience, the target audience. Training is always aligned with the business goal, not just with the preferences. Right? Sometimes some organization comes up with the preferences. No worries. Very, very clear. We don't want any further analysis. We know we want training on this topic. Please make a module. Please make it. That's it. सो ये भी एक है कि कई बार क्या होता है कि हम क्लाइंट को ना कन्विंस नहीं कर पाते। क्लाइंट को कन्विंस करना डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई पेन एक्चुअली कुछ और है, ऑडियंस कोई और है, आप किसी और के लिए ट्रेनिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनको ये एक पॉइंट दिखा सकते हैं कि देखो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट में क्या चाहिए, अगर वो रिजल्ट इससे नहीं आएगा तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि हम ये रिप्रेजेंट करें तो वो हमारी बात सुनने के लिए रेडी हो, एंड देन एक प्रॉपर एनालिसिस किया जाए।
right? So let's continue further. जब हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं तो हम मिस्टेक्स भी करते हैं, हम सबने किया होगा. सो क्या आप बता सकते हैं कुछ मिस्टेक्स जो आप लोगों ने की है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के टाइम? मैम डीएनडी का नाम शायद सब लोगों ने सुना होगा. इट्स अ दिल्ली नोएडा डेली हाईवे. इट्स बीन more than 15 years. Almost same situation थी. These people, they didn't know where is the issue, but they had some huge problem in the organization. I was working with one of the very pioneer company which was being headed by wife of the then home secretary of our country. So we had little extra privilege that we could do whatever we wanted and still we were respected. So I was actually heading this project and I happened to visit DND office after going for 2-3 days and with the questionnaire, because I was actually trying to find out where is the issue. It wasn't a TNA actually, but just we wanted to find out where is the issue. And I came to know there was a huge communication gap between different layer of the employees. Unfortunately, ये वाली बात जब मैंने पेपर पे ला करके रखी और कुछ नहीं, केवल 1 2 3 4 लगातार हमने वीकेंड्स पे पार्टी करके दी, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा सुधर गई थी. इट्स वन ऑफ माय माइलस्टोन केस. समस्या क्या है ये भी नहीं पता था, ट्रेनिंग करके कुछ करेंगे ये भी नहीं पता था, लेकिन समाधान बहुत बढ़िया निकला. क्योंकि when I spoke to say D class people, they said I don't know who is C class. When I spoke to C said कि हम B को जानते ही नहीं. A तो बहुत दूर की बात है. So first party was among the employees only. और fourth party में हमने उनकी families को भी mix कर दिया. They are like भगवान की तरह पूजा करना शुरू कर दिया. अरे यार ये तो बड़ी छोटी सी कहानी थी, हम लोग को पता ही नहीं थी, हम बातचीत ही नहीं करते थे, समस्याएं नहीं थी, सोशलाइजेशन नहीं था. सो द वे वी आर गोइंग अप स्टेप बैक टू TNA, आई वांटेड टू पुट दिस सिचुएशन विद यू ऑन दैट कि कई बार हमें TNA की जैसे कहा, TNA हम करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें ट्रेनिंग करना नहीं, ट्रेनिंग करना भी है, इसकी एनालिसिस कौन करेगा? दैट इज वन. आपने अपने एक्सपीरियंस में डॉक्टर विश्वास ऐसा फेस किया है कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में आपने गलती की और उसकी वजह से कुछ हुआ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? So I would like to share one experience. Yes, of course. Initially, when I actually started giving the freelance trainings, so I used to have a very common form for every sort of training. So then I realized it should not be done. Every training needs a different analysis form. So that was my biggest mistake initially. वंडरफुल डॉक्टर मोनिका, थैंक यू सो मच. एंड डॉक्टर विश्वास, आपने जो एग्जाम्पल शेयर किया वो एग्जैक्टली 1 स्टेप बैक जाने का एग्जाम्पल है कि ट्रेनिंग चाहिए भी या नहीं, एक पार्टी से रिजॉल्व हो सकता है. वंडरफुल. लेकिन अगर आप सब लोग कुछ ऐसा शेयर कर सकते हैं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी. मैंने जब फर्स्ट 2-3 ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया तो सेम तरीके से कंपनी ने मुझे बोला ये टॉपिक है, तो मैंने आगे कुछ सोचा ही नहीं, उसके पीछे कुछ सोचा ही नहीं, मैंने सीधा उसका डिजाइनिंग करना शुरू कर दिया. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, मैंने क्या किया आप सुनिएगा, मैंने क्या किया कि मेरे पास जो खजाना पड़ा है ना उस टॉपिक से रिलेटेड, या मेरे को जो पता है ना उस टॉपिक से रिलेटेड, वो डिजाइनिंग मैंने चालू कर दी. ना मैंने ऑब्जेक्टिव को रखा दिमाग में, ना मैंने कंपनी के गोल को रखा, ना मैंने ये सोचा कि अरे इनके कौन से फंक्शन के लिए इनको ये ट्रेनिंग चाहिए. मैंने कुछ भी नहीं रखा. ना मेरे केस स्टडीज, ना मेरे रोल प्लेस रियलिस्टिक चीज से अलाइन ही नहीं थे. क्योंकि मैंने क्या किया कि मेरे पास चलो इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक है, अभी मेरे पास तो बहुत नॉलेज है इसका, तो मैं इसका प्रेजेंटेशन बना देती हूँ, एक्टिविटीज बना देती हूँ. और ऑडियंस क्या है, अच्छा ऑडियंस ये है,
So I just forgot to align the objective. I just forgot to align the functional and the business goal, and I gave my knowledge to them. हाँ, ट्रेनिंग अच्छी लगी उनको, लेकिन आउटकम जो आना चाहिए वो उतना आया नहीं. ये मेरा गलती था. So this is the mistake I made. Do you feel कितने लोगों ने ऐसा किया था अपने ट्रेनिंग्स में? Yes, no. My both the hands are ready. Right, right. So ये एक चीज हम लोग करते हैं, तो हम लोग को उल्टा गिनती शुरू करना है. हम फॉरवर्ड चले जाते. उल्टा गिनती मतलब यही, वापस से हम लोग आउटकम के बारे में सोचेंगे, क्यों रिजल्ट के बारे में सोच के वापस आएंगे. सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स. डॉक्टर मोनिका जी ऑलरेडी एक बता चुकी है, थोड़े से मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, लेकिन हमको ये पता है कि हम क्या गलतियां करते हैं. हम शायद सेम ही ट्रेडिशनल तरीका भी अप्लाई करते हैं. कई बार क्वेश्चनर्स जो होते हैं वो हम ले लेते हैं, सेम तरीका अप्लाई करना, राइट. एज्यूम कर लेते हैं. एजम्पशन तो हमको बहुत ज्यादा मार डालता है ना. हम कई बार एज्यूम कर लेते हैं. एक क्लाइंट मीटिंग में ऐसा हुआ था कि उन लोगों को ना टॉपिक नहीं पता था. वो लोग के पास कॉम्पिटेंसीज थे. उन लोगों ने मुझे ना कॉम्पिटेंसी बताए, कंपनी का ये कॉम्पिटेंसी है, अभी इसके हिसाब से आप ट्रेनिंग बताओ. ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉम्पिटेंसी में जो कीवर्ड्स थे उसी से एज्यूम कर लिया कि ये कीवर्ड्स से ले लेते हैं. कॉम्पिटेंसी है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के ऊपर ट्रेनिंग ले लेते हैं. बट कम्युनिकेशन तो कितना वाइड एरिया है. हाँ, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स उनके कॉम्पिटेंसी में आता है, बट उनको कौन से लेवल का गुड चाहिए. उनको कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड कम्युनिकेशन गैप है, उनको ईमेल रिलेटेड कम्युनिकेशन गैप है, उनको सिलो वर्क प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उनको, ये मैंने एनालिसिस नहीं किया. सो दैट इज वेयर ट्रेनर अज्यूम्स द नीड and assumptions kills us, right? Based only on manager's input. One of the client told me, हम लोगों को ना रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए. मैंने बोला क्यों चाहिए, ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से आप ये डिसीजन पे आए कि आपको ये ट्रेनिंग चाहिए. तो उन्होंने बोला कि कैफेटेरिया में लोग गलत तरीके से एक दूसरे से बात करें. दे आर टॉकिंग वेरी रूडली, abusive language with each other. And so that is why I assumed. So I told that which type of audience you are considering here. जब उनके senior managers के साथ हमने second meeting किया, when we did the second meeting, actually they were people who are on contract. They were not the regular employees of the company. They were coming from such slum areas that their language is like that. So instead of training, we decided to first make a process, a system, an SOP for them about the behavior. And then we did the training also. We did 2 steps. So how we need to, don't go with only what manager is saying. They only don't know what they need. So sometimes we need to ask the right questions to them. The right questions can also give a direction as to what they require, right? Do you agree with me, everyone? Are you all here with me? Are you all here with me? Yes, yes. Yes, yes. Okay. No post-training follow-up. ये एक हमारा प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है sometimes, you know, the organization doesn't entertain many a times. You know, we want them to give us a follow-up result, a follow-up session, a refresher session, but they don't take it. But that we will keep aside. We will talk about ourselves. So are we taking up a follow-up? Because this follow-up is actually very interesting thing. One of the company in Bharuch, which I was conducting a training for, we did a follow-up session on refresher session for that company. It was a part of need analysis. It was a part. The refresher session after the training was part of need analysis, that after this particular problem is solved, now what problems are coming? Now what are the issues? Now henceforth what you want to understand. And then they came forward and told that whatever training you provided, actually it was a little bit of requirement. It was not the actual requirement. After you gave the training, people recognize what actually the problem was. And then just,
you won't believe me, I got 4 trainings out of that refresher session, 4 trainings consecutive. Because of the training need analysis we did in the refresher session, that these are the topics we require. And in the topics, this is the pain areas we. So that is also one of the business making tactics we can follow. We can give them a complimentary session, right? Generic surveys used, Dr. Monica has already mentioned. So let us proceed further. These are the common mistakes we make. 85% of the trainings fail because of the poor need analysis. We all know that. We all are master in our delivery. We all know that. We have done lots of trainings and lots of good feedbacks we have got. But then we only know from our heart that did the result come? If yes, absolutely bang on. But if not, let us improvise, let us improvise, let us take other ways to do the analysis, right? Sometimes, do you align with this question which is visible on the screen? Are we training what's comfortable or what's truly crucial? क्या सोचते हैं आप इस स्टेटमेंट के बारे में? But I think that depends on what the company wants. Crucial from the company's point of view rather than the training point of view. I mean, trainer point of view. Right. When we go for delivering training, we do deliver the ones in which we are most comfortable, number one. And that comfortable topic should be crucial for the client. Yes, When it is crucial for them and we are comfortable on that, then only we'll go. It has to be a combination of both. Correct. Correct. Sometimes when we already know the topic, but sometimes we are a little bit afraid or maybe we feel it challenging, you know, and that is why we come into our comfort zone while doing the analysis. Do we agree with this, everyone? Yes, no? Are you getting what I'm saying? Yes, yes. So everyone is Yeah, here. Yeah. So The solution I feel is like the training content that should be got audited by the concerned wing or the department which wants the specific outputs. very So good. that will ensure that what is required will be trained. The training content should be prepared first of all, then it should be got audited by the concerned department. Then only the training should be conducted. Wonderful point. And that is a part of need analysis. One step back, one step forward. Wonderful point put by Rajesh ji. And you know, a few of my clients ask for the case studies I'm going to use. And then they discuss with me. The case studies is not relevant to what the actual work is. This is not the need analysis, my dear. You need to analyze it again. You need to see what is requirement. So that is also a part of our need analysis. Checking the website, checking what the company is doing, bringing out the role plays, activities, content, everything relevant, crucial to that workplace, not what is comfortable to us in terms of topic, in terms of, you know, sometimes we don't have time also to put it on the plate. Sometimes we are habituated to use the same content again. That all falls into one step ahead of a training need analysis. And that is why we have not done the requirement analysis properly. We have not got it checked, as Rajesh ji said. And that is why comfort is there, but the crucial thing which the organization requires is missing somewhere. So that is also a part of a training need analysis, my dear. And so there are 3 levels when we do training need analysis. We need to keep in mind individual, function, and organization. All the 3 levels. Right? First is the individual level. Okay, you are saying that the sales are down. Fine, understood. What could be the reason? You tell me what could be the reason. Okay, so let us do this. Suppose, say for example, somebody is telling you, give a sales team a sales training. Why? Yeah, sales is down. Sales नीचे हो गया है हमारा.
आप क्या पूछोगे उनको? How is the communication of your salespersons? How is the presentation of the product of your salesperson? Okay. Do they have very good listening skills? When they talk, do they smile? They are rude, they are rough. They push marketing or they market in a very sophisticated manner. While marketing, they feel proud, they have positive attitude or they have negative attitude. How are they doing all such things? So I think 5, 7, 10 questions I have already given. So basically, what I do is I actually listen to their sales pitch. I ask clients to make me listen to their sales pitch along with their body expressions. Also, I prefer to ask them, do they know their competition? Do they know their customers? Do they know that, okay, if they know they are very good with their product, do they really know that what are the other companies offering the product, what are the USP of their products, special USP? So all these questions, I think I follow the C3P for P2 formula for doing the training need analysis for sales. There are 3 C's and 2 P's. When product pricing, then they know their competition, they do know their customers, they do know their own company or not, what is there in the company, because sometimes there are new joinees and the company, they do not know about their own company. So these sort of questions are basically asked while during the sales training. Wonderful. Thank you so much, Dr. Monica. Anybody else has another point of view? From where you will start? What you will try to understand? From where you will start? Anybody else wants to say anything? Okay. So It's here, sometimes better to throw them question back to reflect that, okay, you said that productivity has gone down. This was the concern, right? The productivity had gone down. So, as per your identified area, what are so is it the technical problem, or as in demand supply meeting problem, or is it your employee, they are struggling with something, or is it interdepartmental? So it's very important to first ask them which is the highlighted key area for them, and then yes, can build over that conversation. So that is one thing apart from what others have mentioned here. wonderful, wonderful. Thank you, Kanu. Thank you so much, every one of you. What Sumita said, just keep that in mind. Now I'm asking again. What Dr. Vishwas and Dr. Monica mentioned, according to them, they have already taken this, that the problem is with the sales team. They've already assumed that the problem of sales going down is with the sales team. Are you getting this, everyone? But the question again comes, that whatever questions Dr. Vishwas and Dr. Monica said, whatever Sumita said, they all are correct. They will come at their places. But what Sumita said makes more sense, that first of all, do you agree with me that sales going down is not only the problem of the sales team, it may be the problem of any other department or any other functions. Yes, no. True. Absolutely. True. Right? Absolutely. So we will not assume first. Whenever they will come with a certain type of audience, certain type of pain point, we will try to analyze, as Sumita said, it's technical. How are your products? Do you have customer satisfaction with your products? Why do you think the sales are down? Have you analyzed it? Do you have any data in which the customer says that the product is not good? Or there is a delay in the supply and demand chain? So wonderful point, Sumita. So we need to go one step back. We are not supposed to take, we are not supposed to take and assume that चलो sales training चाहिए ना, sales team में ही problem है, बिठाओ उनको. अभी ना recently मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए ट्रेनिंग ली है.
उनके ऑफिसर्स, उनके रिकवरी ऑफिसर्स का ट्रेनिंग लिया. व्हाट स्मार्ट पीपल दे आर. और लंच ब्रेक में वो लोग मुझे सब बता रहे थे कि मैम हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं हमारी कंपनी के लिए. एंड कंपनी वाज आल्सो इक्वली हैप्पी विद देम. मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो ट्रेनिंग में क्या हुआ. वो ट्रेनिंग में ना उनके एचआर और उनके जो हेड्स थे अलग अलग जगह के, वो सब प्रेजेंट थे. दूसरे दिन का सेकेंड हाफ में वो लोग अपने प्रोसेस और उसके बारे में समझाने वाले थे. आई वॉज ऑल्सो देयर. 1.5 दिन हम लोगों ने ट्रेनिंग किया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाना चाहिए. ठीक है. आपको मैं बताऊं, नेक्स्ट डे हाफ सेशन में, जो सेकेंड हाफ सेशन था, उन लोगों ने इतने सारे सिस्टम प्रॉब्लम्स निकाले, प्रोसेस प्रॉब्लम्स निकाले. एचआर और हेड्स के पास उनको देने के लिए जवाब ही नहीं थे. अल्टीमेटली एचआर टोल्ड मी, मैम आप ये सब अपने तक रखिएगा, लेकिन थैंक यू फॉर दिस ट्रेनिंग. अगर हम लोग ये ट्रेनिंग करते ही नहीं ना, तो हमको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में हमारे फील्ड ऑफिसर्स को कम्युनिकेशन का या अपने प्रोडक्ट को बेचने का प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली में ऊपर के सिस्टम से जो प्रेशर हो रहा है या जो प्रॉब्लम्स है, वो एक्चुअली में इश्यूज है. सो दैट इज हाउ they were able to make SOP. they were able to, उन लोगों के कुछ एप्स थे. अभी कस्टमर के पास जाके वो एप्स में ही प्रॉब्लम, कस्टमर के सामने उनको वो एप्स फिलअप करने हैं, वो फॉर्म्स फिलअप करने हैं, वो चल ही नहीं रहे हैं. कस्टमर ट्रैकिंग में जो पूरा सिस्टम है, जो इंसान बेच रहा है, जो दुकान में बैठा हुआ है, ही इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. और आप इन लोगों को, बेचारे को, जो दिन रात लगा के ऑफिसर्स बैठे हुए, उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हो, वो भी गलत टॉपिक के ऊपर. So this is how we went back. In the training itself, it happened. And then they also asked me कि आप हमको बताओ कि इसका, जैसे डॉक्टर विश्वास ने बताया कि उन्होंने पूरा एनालिसिस किया और अल्टीमेटली द सॉल्यूशन वाज अ पार्टी. पार्टी करो एंड कनेक्शन बनाओ. सो दैट इज द वे वी हैव टू. वी आर डॉक्टर्स एक्चुअली. हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डॉक्टर हैं, और हम लोगों की जरूरत अभी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत पड़ने वाली है. और कई बार हम उनको हेल्प नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट वांट इट, बिकॉज दे आर वेरी वेरी क्लियर व्हाट दे वांट. लेकिन जहां पे भी हम कर सकते हैं, हम इस तरीके से डीप डाइव करके उनको सपोर्ट करेंगे जितना भी हम कर सके. सो वी विल गो टू द देन फंक्शनल लेवल. इंडिविजुअल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, फंक्शनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, एंड बिजनेस गोल से वो अलाइन है कि नहीं. आप क्या चाहते हो एक्चुअली में. एक क्लाइंट मीटिंग में क्लाइंट ने पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया हमको. बोलते हैं ये टॉपिक पे ट्रेनिंग करते हैं. अच्छा ठीक है, नहीं मुझे ऐसा लगता है इस टॉपिक में हम ये भी ऐड करते हैं. इतना सारा एक दिन में आप नहीं कर सकते हो. उनको ऐसे हमने समझाया. एक दिन में टोटली रिजल्ट भी नहीं आ सकता है, वो भी एक आपका गलत एजम्पशन है. तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में हमको फैक्ट्स भी उनके सामने रखने हैं. मतलब एक दिन की ट्रेनिंग में पूरा कम्युनिकेशन एकदम जोरदार हो जाना चाहिए, इस तरीके का जब एग्जैजरेशन होता है, तो हमें वो एनालिसिस करके भी उनको बताना है कि बेसिकली द रिक्वायरमेंट इज दिस एंड द नीड फॉर दिस इज अ सीरीज ऑफ ट्रेनिंग, नॉट अ सिंगल ट्रेनिंग. ये भी हमारे एनालिसिस का हिस्सा है. हाउ मेनी ट्रेनिंग्स, हाउ मेनी सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स, हाउ मेनी सेशंस you require on this, what requirement you're putting forward, right? तो हमने फिर उनको, बहुत ज्यादा वो लोग कंफ्यूज हो गए. हमने सिंपल क्वेश्चन उनको पूछा, तकलीफ क्या है, किस गोल को अचीव करना चाहते हो. आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर एक लीडर है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप अपने एम्प्लॉयज में क्या देखना चाहते हैं. उन्होंने बोला कि मेरे एम्प्लॉयज ना बाहर क्लाइंट्स के साथ जो बात करते हैं ना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात करने चाहिए. जिस जगह पे नो बोलना है ना, उधर नो बोलना चाहिए. हम लोगों ने वो नोट डाउन किया. उससे हमने कस्टमाइज मॉड्यूल बनाया. चलो ठीक है, अभी ये कितने दिन में हो सकता है, कितने सेशन में हो सकता है. सो वी नीड टू टॉक अबाउट डिफरेंट क्लाइंट्स इन अ डिफरेंट मैनर टू गोइंग टू दैट लेवल कि हम लोग डॉक्टर्स हैं. यहाँ पे तुमको पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कल क्या खाया था तुमने.
खाने का सरदर्द से क्या लेना देना है, वो मुझे पता है लेना देना है भाई, मैं ट्रेनर हूं, मैं इंडस्ट्री के बारे में जानता हूं, आप मेरे पास आए हो, सो आप ये बात समझो. So that is how we will align all the three levels when we are giving them this analysis, right? हम इसके बारे में already discuss कर चुके हैं. 4 types of organizations or requirements will come in front of us. एक organization जो बखूबी जानता है उसको क्या चाहिए, very very clear, क्योंकि वो खुद ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कर चुके होते हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं TNA करने के लिए. वहां पे we will give them what they want, full stop. Second, ऑर्गेनाइजेशन जिनको ट्रेनिंग कौन से टॉपिक पे लेना है वो नहीं पता है, उनको सिर्फ पेन पॉइंट पता है, हमारी ये तकलीफ है, अब आप हमको बताओ. साइमन सिनेक के बारे में जानते हैं आप लोग? साइमन सिनेक सुना है किसी ने? हैव यू हर्ड Yes, अबाउट yes, साइमन सिनेक? yes. साइमन सिनेक इज अ वेरी बिग कंसल्टेंट. उन्होंने यूएस की एक कंपनी ने आके उनको बोला कि हमारा ना 60% प्रोडक्शन डाउन हो गया सडनली, और आप हमको सोल्यूशन बताओ. तो पेन पॉइंट बताया उन्होंने, प्रोडक्शन डाउन हो गया. अभी उन्होंने चालू किया नीड एनालिसिस. अभी ट्रेनिंग वर्ड यूज नहीं कर रही हूं इसमें, क्यों? क्योंकि पहले तो एनालाइज करेंगे ना जरूरत क्या है. अगर जरूरत में ट्रेनिंग आया तो फिर TNA लगेगा, तो हमें वहां तक जाना है. तो फिर उसने क्या किया, वो तो ठीक है, वो एज अ कंसल्टेंट थे, जैसे डॉक्टर विश्वास ने बोला अपना जो काम जो कर सकता है वही कर सकता है, हम ट्रेनर के हिसाब से ही कर सकते हैं. हम जब मीटिंग करेंगे हम जितना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जितना डेटा ले सकते हैं उतना ही. कंसल्टेंट को अलाउड है कि वो कंपनी में जाके प्रोडक्शन में 1-to-1 कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, तो उन्होंने किया. 6 महीने तक उनको एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिला जिसकी वजह से ये चीज हो रही है. देन उन्होंने 1-to-1 कॉन्वर्जेशन शुरू किया, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी विच ही टोल्ड. आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था जिसकी वजह से प्रोडक्शन डाउन था, एंड दैट वाज गॉसिपिंग. So it's a real issue. यस, इट्स अ वेरी बिग इश्यू एक्चुअली. तो गॉसिपिंग की वजह से लोगों को अच्छा नहीं फील होता था कंपनी में आना, और लीव्स बहुत ज्यादा ले रहे थे लोग. एंड देन उन लोगों ने गो ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किया. हर जगह उन्होंने अच्छे अच्छे फोटोज लगाए. आर यू गॉसिपिंग? आर यू फॉलोइंग द गो ग्रीन प्रोजेक्ट? ऐसे करके फिर इवेंचुअली बहुत अच्छा एनवायरमेंट, टॉक्सिक एनवायरमेंट था जिसको रिजॉल्व किया. सो कई बार उनको पेन पॉइंट्स पता है, उनको ये नहीं पता कि उसके लिए उनको ट्रेनिंग चाहिए, या उनको टीम बिल्डिंग आउटबाउंड एक्टिविटी करानी है, या उनको क्या कराना है. तीसरी ऑर्गेनाइजेशन ये है जो पूरी तरीके से गलत चीजें लेके बैठी है. ऑडियंस भी गलत चूज किया है और ट्रेनिंग टॉपिक भी गलत चूज किया है. ठीक है, इन लोगों के लिए हमको डॉक्टर बन जाना है. एंड लास्ट वन इज, वो सिर्फ कुछ कंप्लीट करने के लिए हमारे इस साल के इस क्वार्टर का ट्रेनिंग का इतना बजट है, ये ट्रेनिंग्स हमको लेनी है, आप ले लो. लेकिन फिर भी हम अपना डॉक्टरपन छोड़ेंगे नहीं, हम पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे. अगर वो हमसे अग्री करते हैं तो ठीक, नहीं तो हम अपना बिजनेस चलाने के लिए यस बोल के आगे बढ़ जाएंगे, एंड वी विल गिव अवर बेस्ट टू देम, right? So these are the 4 types of organization in industry right now. Can I share one more Please. perspective? In my Yes. experience, I also come across organizations where they don't know that they would need training or they have a problem in hand. It's like कुछ चला आ रहा है कितने सालों से, they're just continuing. It's like no loss, no gain kind of a situation, right? You understand that? So then somebody steps in from an external point of view and then says, hey, you need to kind of move forward. Your competitors are going ahead. So that's probably the fourth, rather the fifth type of organization which I've come across. Just wanted to share my 2 cents. Thank you, Vijay ji. Absolutely correct. And because आपने शेयर किया, एक सिटी है हमारे स्टेट में, वहां पे आप देखो जो चलता आ रहा है ना वही चलता आ रहा है, और ट्रेनिंग के बारे में बात भी नहीं होती है, और एवरीथिंग इज लाइक
क्योंकि ओनर जो है या जो बहुत पूरा पूरा कम्युनिटी ही उस तरीके का है, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, एंड वो लोग ऐसा ही बिलीव करते हैं. सो मैंने बहुत सारी बार पिच इन किया, बट वही है कि जूता पहनना ही नहीं चाहते तो जूता बेच नहीं सकते, ऐसा हो गया था. दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट विजय जी, थैंक यू सो मच. एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? यहाँ तक आपको कुछ भी ऐड करना है या कुछ भी आप अपनी साइड से बोलना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड, या तो हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो थंब रूल हमारा यही है, हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं. अंडरस्टैंड करना है हमको डिफरेंस, रियल ट्रेनिंग नीड्स, रियल टारगेट ऑडियंस, और इश्यूज जो एक्चुअली ट्रेनिंग चाहिए ही नहीं, उसके लिए इश्यू कहीं और से आ रहा है. वो प्रोसेस का हो सकता है, वो स्ट्रक्चर का हो सकता है, मोटिवेशन का इश्यू हो सकता है. बहुत सालों से काम कर रहे हैं, रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो तो डिसएंगेज हो जाएंगे आपके एम्प्लॉयज. और आप बोल रहे हो अरे उनको ना ट्रेनिंग दे दो. किसका? स्ट्रेस मैनेजमेंट का, प्रेशर सहन करने का, कोई भी कंडीशन में काम करने का ट्रेनिंग दे दो, खुशी खुशी वो लोग काम करें. हम अपनी तरीके से कुछ नहीं दे सकते, बट यू मेक गिव देम ट्रेनिंग. सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. And we being doctors and trainers who are going to rule the industry of making people better version of themselves, thank God, God has blessed us with this wonderful profession कि हम लोगों के असली पोटेंशियल को उनको दिखाते हैं कि भाई तुम जागो, तुम ये हो एक्चुअली में, राइट? तो वो वर्क करेगा कि नहीं, उसकी जरूरत है कि नहीं, वो सबसे पहले हमको जानना है. तो बीइंग ट्रेनर्स अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऑर्गेनाइजेशन को बताना, भाई आप गलत हो. आप नीचे के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो ना, उनको जरूरत नहीं, आपके मैनेजरों को जरूरत है लीडरशिप ट्रेनिंग की. आपके मैनेजर वर्क एलोकेशन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके नीचे के लोग स्ट्रेस में हैं, इसलिए आपके नीचे के लोगों को वर्कलोड ज्यादा लग रहा है. जिसको वर्कलोड ज्यादा है वो वर्क एलोकेशन सिखाने की जगह पे बोलते हैं इनको ज्यादा काम करने का आप सिखाओ. So that is how this industry is going right now. Not because people are intentionally doing it, because they need doctors like us, right? So that is why we all are here. Okay, let's proceed further. कई बार tools की भी जरूरत होती है, कई बार collaboration tools की जरूरत होती है. कोलैबोरेशन इसलिए नहीं हो रहा है अच्छे से क्योंकि कोई प्रोसेस ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं बनाया है कंपनी ने. और फिर बोलते हो वर्क प्लेस एटिकेट और कम्युनिकेशन के ऊपर ट्रेनिंग लीजिए. हाँ, लेकिन आपने कोई सिस्टम बनाया है नहीं. कोई किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा है, कभी कोई ईमेल भेज रहा है, तो कभी कोई फोन पे, कभी कोई व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले रहा है. तो देन आप बोल रहे हो कि ऑर्डर के बारे में तो पूरे प्रोडक्शन टीम को पता ही नहीं है. But then you are not sending the email. So these are the questions we should have in our mind when somebody comes to us. भाई ये ट्रेनिंग है, इसके ऊपर ट्रेनिंग लेनी है, अब आप बताओ. And so this is how we will go. So ये just मैंने केस स्टडीज लिए थे. मैं ये प्रेजेंटेशन आपको शेयर करूंगी तो आप इसके ऊपर सोचिएगा. जैसे कि सुपरवाइजर है, they aren't getting along with the field teams. अच्छे से वो लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्किल का लैक है या ट्रस्ट का लैक है? तो इट माइट नॉट बी अ ट्रेनिंग इश्यू, है ना? कुछ कॉन्फ्लिक्ट है अनक्लियर रोल्स की वजह से, पावर स्ट्रगल है, ईगो है, इंटरपर्सनल टेंशंस है, राइट? तो हाँ, इसमें से हम कुछ टॉपिक्स निकाल के ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, बट क्या क्या चीजों का जरूरत है? So we need to diagnose that. Another just one example I've taken is customer complaints have doubled in 3 months. ये already हम discuss कर चुके हैं. Customer complaint बढ़ रहा है तो आप बताओ product quality की वजह से है, क्या है, किस तरीके से है, right? Then productivity is low, ये भी हम discuss कर चुके हैं. लास्ट में मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ, just we are going to wrap up our session. Some of the techniques I want to share I'll just take 5 more minutes, 5 to 6 minutes. That हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, हमने डिस्कशन से अपने लर्निंग्स लिए होंगे. I was not having an intention to
put everything like iske baad. No. I wanted all of us to bring all the things on platform. How do we do? Where do we go wrong? What we can improve? So एक लाइट हाउस इंटरव्यू है जो हम यूज कर सकते हैं. हम जो पेन पॉइंट है वो हमें पता चल गया, ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बताया. फिर वो लोग हमें पूछते हैं आप किसी से बात करना चाहते हैं, कुछ भी है तो हम इंटरव्यूज ले सकते हैं, टॉप परफॉर्मर्स के इंटरव्यूज. उनसे पूछ सकते हैं कि what do you do that others don't? What is the attitude you carry? How you are taking your organization? So उनकी जो अच्छी बातें हैं वो हम लेके उससे भी एक एनालिसिस कर सकते हैं, और दूसरे जो लोग उस साइड नहीं है उनको उस साइड लाने के लिए वी कैन मेक अ टारगेट ऑडियंस. जैसे से फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है, उसमें सारे लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कुछ चंक है उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, हम उनको फिल्टर करके कर सकते हैं. सो लाइट हाउस इंटरव्यूज कर सकते हैं. वी कैन डू पेन पॉइंट मैपिंग. मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, डिले इन रिस्पॉन्डिंग टू इंक्वायरीज. पॉसिबल कॉज लैक ऑफ ओनरशिप और क्लैरिटी ऑन हु शुड रिस्पॉन्ड. प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट में चलो टीम आ जाओ, ये प्रोजेक्ट हमें करना है, किसी का रोल डिफाइन नहीं किया. रोल डिफाइन नहीं है तो ओनरशिप कोई लेगा ही क्यों, राइट? तो हमको जो वर्क एलोकेशन कर रहा है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी ही नहीं है, उन लोगों की ट्रेनिंग्स हम ले सकते हैं. सो लाइक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि पेन पॉइंट जो था उससे हमने आगे क्वेश्चंस पूछे. अब हम सबको पता है रूट कॉज एनालिसिस हम करते हैं, हम 5 वाई पूछते हैं, वो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, वन ऑफ द टेक्निक. बहुत सारे ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी है, सर्वे करना, क्वेश्चनएयर बहुत सारे हम डिजाइन कर सकते हैं. अभी हमने एक कंपनी के लिए क्वेश्चनएयर डिजाइन करके ही ट्रेनिंग के टॉपिक्स डिसाइड किए, लेकिन जब हमने 1-to-1 बात किया तो उसमें से काफी सारे ट्रेनिंग के टॉपिक्स ड्रॉप हो गए, राइट? वो सिर्फ सर्वे के माध्यम से नहीं बता सकते हैं. जब 1-to-1 कॉन्वर्सेशन किया तो उसमें से सिर्फ 1-2 ही टॉपिक्स ऐसे निकले जिनके ऊपर ट्रेनिंग्स का रिक्वायरमेंट था. Then shadowing the observation sheets. Observe the staff in action for gaps. As a trainer, शायद हमको ये opportunity we may get it, we may not get it. I have got it. I have got one opportunity to be with the staff, to observe the staff, how they are communicating, how their body language is, what do you think they require as a training? And then we designed it together. The 5 whys and the question answer session, the counter question which we are asking them, these all techniques we can follow. Main point is we need to step back, don't assume. First identify training is required or not. And one step ahead also we need to think, as we all discussed, that even after doing the analysis, are we aligning with the need of the company exactly? As Rajesh also mentioned, we need to get it checked. We need to get it verified. So that is how we will do the analysis, right? All these things we have already discussed. Just one thing I wanted to show you. This is also one of the slides I'll be sharing with you people. This all questions we have discussed. What exactly is happening that you want to fix? Who is noticing this issue and why now? कौन से इंसिडेंट से आपने डिसाइड किया कि आपको इस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग लेना है? आपने कोई एनालिसिस किया है? Do you have the data with you? Identify the impact. Impact क्या होगा? KPI result क्या अफेक्ट कर रहा है? Scope the affected audience. Is this issue widespread or limited to specific roles only? ट्रेनिंग लेनी है, सबको बैठा दो, right? Have high performers also shown this issue? Question mark. Root cause clarity. What has changed recently? क्या change हुआ है? Expectation change हुआ है? Tools change हुआ है? Is it due to lack of knowledge, skill, attitude, motivation, or process? We need to identify. Identify the current response. Current response. Have you
already taken such kind of training earlier? That will help us to design our training. Then that will help us to analyze what we are supposed to give. One of the training, what happened, I went and directly started a communication training. They did not give me any input. I asked them. They told me basic communication training you take. As soon as the first 7 C's thing I started, they told me, Madam, last month we have had the same training. Why are you telling us the same content again? There comes my mistake. Again, I did a mistake. I did not ask what response was there when this problem came. Have you come to me for the first time, or have you conducted any training sessions on any other topics before also? That is also one of the things we need to do in the analysis. We also need to take the stakeholders' input. And here we end our session. So when we do need analysis, just think of us as doctor whose diagnosis will lead to the pain and will eradicate the pain through medicine of training. Here I'll add training if required, only if required. And if you don't ask the right question, you will keep training the wrong answers, my dear. So ये just एक 1 hour था, इसलिए मैंने बस आपसे बात करके एंड जो कुछ भी शेयरिंग हमको मिला उससे हमने ये सेशन कंप्लीट किया है. I hope that your time is so valuable. I hope that मैंने उसको वेस्ट नहीं किया हो and 1 hour में कुछ भी आपको मिला हो which you have acquired as a knowledge. Thank you so much everybody for wonderful participation. Thank you so much. Thank It you was so really much. a Madam. wonderful session. Hello, Madam, one thing. Yes. Yeah, this is Mirendra from Mumbai. Share with all my people. Okay. You all are Okay. my people, so I want to share. That is what my intention is. Thank you. Thank you. You can We've share the learned- PPT on this one too. Yes, I'll share this The PPT PPT. which I have made. I'll share the PPT On the with what? On the WhatsApp. Yeah. you. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you, all of you. Thank you so much. Learned a Thank lot, you. Thank you Kananji. so Thank much. you so Thank you much. so The much, the